तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हेमेटामेसिस. इट्स अ 10 मार्क क्वेश्चन एक्चुअली इन RJHS. तो ये सीरीज़ में ऐसे ही स्टार्ट करी क्योंकि इफ आई टीच समवन आई कैन रिमेंबर बेटर. तो हेमेटामेसिस इज़ नथिंग बट वॉमिटिंग ऑफ ब्लड और coffee ground like material. So it usually presents. It is usually presentation of GI bleed, that is usually from the structures proximal to ligament of treats. So I'll just write main points, that's all. So whatever is proximal to the ligament tree, that is called hemetamesis. Suppose that it is called melena. Melena nahi, hematochezia if it's frank blood from the rectum. Melena is passing the upper GI bleed only, so that will appear as coffee ground like material or very dark color thing. Then coming to etiology, it can be, so we'll divide it as neonatal plus infants, and then you have children. So you can divide it as esophageal causes, then from the stomach and duodenum, because all these structures are proximal to ligament of Treats. So duodenum, and then you have systemic causes also. So esophageal would be esophagitis, and then trauma during NG insertion. Whereas in children, you have esophageal varices and malarious tear that is seen after forceful retching or forceful vomiting. So esophageal के lower portion में tears हो जाता है, जिसको hematomesis would be seen. Stomach में अगर infants और neonatal में, तो most common is swallowed maternal blood और स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस भी, जिसको से हमें सैंडीफर्स सिंड्रोम ये सब देखने को मिलता है. सॉलिड मैटरनल ब्लड में द हाउ डू यू डिफरेंशिएट इज बाय एब्डोमिनल टेस्ट. सो अब वही सेम स्टमक में अगर है तो चिल्ड्रन में गैस्ट्रिक अल्सर्स, एंड देन हेनोक्शॉलिन प्रोक्यूरा ऑल्सो, एंड देन वैस्कुलर malformations. This is also rare cause, but it is usually seen. Then you have duodenum also. Duodenum में क्या क्या causes है? Usually duodenitis बच्चों में, infants में, but same children में है तो duodenal ulcer and a pancreatitis, hemosuccus, pancreatitis. और systemic causes में तो it's very well known that it is vitamin K dependent bleeding. Or systemic manifestations in children will be bleeding and clotting disorders. So यही सेम एक्सपेंड करके और थोड़ा लिखेंगे तो ओके. So sometimes all this bleeding has to be differentiated from if the Munchausen by proxy भी कभी possible है. Munchausen syndrome by proxy, which is usually seen in the caregivers. That also you should be a bit cautious about and have good clinical suspicion. उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि अब हम लोग we are not going in depth, we are just discussing main points. Danger signs अगर मिलीना है तो, अगर severe anemia तो पता है ना, less than 7 ग्राम पर डी. अगर हाइपोटेंशन एंड टैकिपनिया है, मीन्स severe hemetamesis, tachycardia. Along with this there is orthostatic hypotension को कवर कर दिया. उसके बाद decompensation with appearance of encephalopathy in liver disease. लाइक अगर सिस्टमिक कॉजेस है तो हम पता चलेगा कि ऐसे लिवर डिजीज़ है, तो हमें उसके बाद अगर हमें पता करना है कैसे करना है तो हमें हिस्ट्री पूछना चाहिए. हिस्ट्री में हमें ऑनसेट, ड्यूरेशन, वही सेम हम जैसा लेते हैं, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी पूछना चाहिए, फिर क्वांटिटी, फिर कितने एपिसोड्स, हाउ मेनी एपिसोड्स associated with any pain or not, that you have to ask. Then you have to ask about melena,
hematochezia. This will suggest if there is any severe significant bleed. Then you have to ask also about drug history. Most common drug history is NSAIDs, then ibuprofen, corticosteroid, use. You have to ask about all this. Then you have to ask about any liver disease. How do we know liver disease if presence with jaundice? You have to ask about this. Or nasopharyngeal bleeding is there or not associated. मतलब ये सब nasopharyngeal, all this suggests that any systemic causes are there or not. फिर उसमें भी अगर ये recurrent है कि recent episodes है, then you have to ask about history of easy bruising or bleeding disorders. ये सब पूछो. उसके बाद हमें एग्जामिनेशन में हमें you have to examine skin also. Examine skin for bruising, petechiae, mucosal bleed. फिर अगर क्यूटेनियस साइंस देखना है, मतलब क्यूटेनियस bleeds है कि नहीं देखना है, this just तो फिर if there are cutaneous bleed you have to see for the sites involved. If there are more than 5 sites और इतने सारे bleeds है, cutaneous bleeds और cutaneous generalized vascular formations, then you have to suspect GI angiometoma. ठीक है. फिर उसके बाद हमें जनरल एग्जामिनेशन होने के बाद abdominal examination में you have to see for portal hypertension, then splenomegaly, फिर prominent veins over the umbilicus, same thing इसी का, और abdomen. फिर उसके बाद we come to management. ठीक है. मैनेजमेंट में क्या करेंगे? मैनेजमेंट इज फर्स्ट यू हैव टू सी फॉर द, ठीक है, उसको NBM रख लेते हैं पहले. फिर उसके बाद ABC, फिर एयरवे में ऑक्सीजन बाई प्रॉन्ग्स mask or something. Then you give IV access for 2 large bore cannulas. Then you give fluids in case of any hypotension or tachycardia. फिर उसके बाद if there is massive bleed, then you have to plan for blood transfusion and the ratio 1:1:1. तो ये तीनों products देना है, PRBC, FFP, platelets, फिर correction then electrolyte abnormalities को करेक्ट करने के लिए देखना. then उसके बाद trials tube insertion and aspirate if there is active bleed. इससे पहले तो we forgot we have to do investigations. तो वही रूटीन हमारा CBC सारा भेजना है. फिर coagulation प्रोफाइल, फिर उसके बाद बायोकेम में हमें RFT, LFT, फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भेजना. आफ्टर दैट यू हैव टू सी फॉर एनी ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग के लिए सैम्पल्स निकालना पड़ेगा. देन यू हैव टू सेंड फॉर ABG में लैक्टेट एंड बेस एक्सेस को देखना है और इमीडिएटली अगर हेमाटोक्रिट के लिए देखना तो करना है. फिर उसके बाद अपर GI एंडोस्कोपी, फिर USG एब्डोमेन करना है. इन द एंड में USG एब्डोमेन पर लिवर and portal hypertension, liver disorders, portal hypertension and vascular malformations. फिर हम कमिंग टू अप्रोच मतलब कैसे करना है. अगर हमें पहले देखना है कि इज इट हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ स्प्लेनोमेगाली और लिवर डिजीज, पहले देखना है. अगर यस तो यू हैव टू सस्पेक्ट एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑटोनोमस ऑब्स्ट्रक्शन CLD और उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना. नहीं हो रहा है तो यू हैव टू स्टार्ट लाइक अगर एपिगैस्ट्रिक पेन है, डिस्पेप्सिया प्लस NSAID कंजप्शन और यूज़ है, अगर है तो
So it could be peptic ulcer. अगर नहीं है तो you have to see that if it's bleeding from other sides or family history और bleeding disorders है कि नहीं देखना. अगर ये सब है तो you have to suspect bleeding and clotting disorders and treat according to that. अगर नहीं है तो you have to see for any multiple skin hemangiomas are there or not, or vascular malformations. अगर है तो you can suspect the GI vascular malformations. अगर नहीं है तो suspect malaria history. Mostly it is based on the history only. ऐसे approach में तो होएगा भी नहीं. But for answer writing this is much better. So this is the end.